अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू React.js सीरीज। तो आज के इस वीडियो में हम रिएक्ट फॉर्म बनाने वाला है। React.js के फॉर्म आप सबको जो पता है, रिएक्ट जो फॉर्म क्या होता है, फॉर्म और वेब का इम्पोर्टेंट एक्चुअली मैंने इसमें हम क्या कर लेते हैं, कोई डाटा वगैरह जो होता है ना वो यूज लेते हैं और सबमिट कर लेते हैं। तो हम इस वीडियो में React.js में फॉर्म करने वाला है यूजिंग रिएक्ट। तो चलते हैं कोड एडिटर की तरफ। सबसे पहले एक सारी में फोल्डर बनाते हैं, नाम कंपोनेंट, और इसके अंदर एक फाइल बनाते हैं फॉर्म और जेएस नाम से। फॉर्म का फंक्शन बनाते हैं। फॉर्म बन गया। अभी यूज डेट को इंपोर्ट करते हैं React.js। चलो हमने ये इंस्टॉल कर लिया। अभी हम क्या करना है, फॉर्म तो सिंपल नहीं बना सकते हैं, तो जाते हैं हम दो स्टेप पे और ऐसे जो फॉर्म है वो यहाँ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे स्टाइल वगैरह कर लेते तो बहुत सारा टाइम लगेगा इस पर। तो हम बस तैयार पुराना फॉर्म लेते हैं और इसमें React.js का जो है वो फंक्शनलिटी ऐड कर लेते हैं। तो ठीक है, दो स्टेप का पेज मैंने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले जो हमारे पास लिंक है ये कॉपी कर लेना और पब्लिक फोल्डर में जाके HTML का फॉर्म है। चलो मेरे पास तो पहले से ऐड है, ये रिमूव कर लेते हैं। मैंने पेस्ट कर लिया है। दोबारा जाते हैं और अभी ये CSS के साथ ये वाले भी कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट कर लिया, सेव कर देते हैं। ये फाइल अभी हम क्या करना है, यहाँ सर्च कर लेंगे। फॉर्म ये वाला ये कॉपी कर लेते हैं और ये पेस्ट करने के बाद ये सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और यहाँ ये एक्सटेंशन आप लोगों ने ये डाउनलोड करना है, मैंने इंस्टॉल करना है। अभी तो मेरे पास इंग्लिश बनेगा तो मैं जाकर के ऑनलाइन कर लेता हूँ। ऑनलाइन ये फॉर्म मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया। यह हमारे पास ये स्ट्रिंग कन्वर्ट की यहाँ से कॉपी करनी। मैं पेस्ट कर दिया, इंपोर्ट कर लेना। कर लेता हमारे पास फॉर्म आ गया। हमारे पास ये फॉर्म है ना, बिल्कुल पूरे स्क्रीन पे बहुत बड़ा है। मेरे को तो ये सेंटर करना है, तो सीधे इस कोड की तरफ जो F.css में हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये क्लास नडिया क्लास में कंटेनर लिए हम और ये टारगेट कर लेते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स justify thinking center line center
सेव करते हैं। जैसे वो सेव के हमारे पास मेंशन आउट है और छोटा हो गया थोड़ा सा। ये वाला जो लाइन है ये हमें नहीं चाहिए। ये वाला भी नहीं चाहिए। ID image मेन हो गया। इसका टाइप टेक्स्ट, तो पास में टाइप पासवर्ड। हमारे पास तीन वेरिएबल है, काउंट name, set name, use step, and we copy करते हैं 3 times। ये हो गया यहाँ नीचे आते हैं इवेंट के अंदर वैल्यू क्या लेंगे, वैल्यू नेम लिखना है ऑन चेंज फंक्शन बनाएंगे नेम। तो यहाँ हम ई लेते हैं target value। ये हम ईमेल में बनाते हैं। ईमेल में ईमेल value फिर पासवर्ड में आते हैं value पासवर्ड on change event पासवर्ड target value। अभी फॉर्म में आते हैं फॉर्म का फंक्शन फॉर्म डेटा फंक्शन हमने बनाया फॉर्म डेटा। इसका नाम क्या है, फॉर्म डेटा। इसमें हम ई पास कर देते हैं जो हमने नीचे वैल्यू
यहाँ हमने लिखा हुआ है आप तो ई डॉट डिफॉल्ट इवेंट डिफॉल्ट, क्योंकि अगर हम ये नहीं लगा तो फिर हमारे पास पेज रिफ्रेश होता है, फिर इसका कोई फायदा नहीं है सिंगल पेज एप्लीकेशन। और कंसोल डॉट नेम ईमेल पासवर्ड, अगर हमें कोई मतलब बैकएंड का एपीआई और कॉल करना है तो यहाँ वो लॉजिक हम यहाँ लगाते हैं। इसको कर सकते हैं ब्राउज़र निज़ाम कर लिया, ईमेल निज़ाम ये पास है। कंसोल पे ये से हम या मैं पे क्लिक कर लेते हैं, हमारे पास कोई एरर है, ठीक है ब्राउज़र पे हमारे पास एरर फॉर्म का है, ये कैपिटल ये हमारे पास एरर फॉर्म, फिर सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया हमारे पास कंसोल पे आ गया नेम ईमेल और पासवर्ड तीन हमारे पास सेंड हो गया। नेम का लगा आपको कंसोल पासवर्ड फिर सेव करके और चलते प्रोजेक्ट पे सबमिट करके अमेज़न ईमेल एंड पासवर्ड एज ये आता है हमारे पास कंसोल पे शो हो रहा है। ये जो डेटा आपको कंसोल पे नजर आते हैं ना वेब ब्राउज़र का, ये जो डेटा है ना मैं आपको यहाँ ये शो करके दिखाना चाहता हूँ। तो चलते हैं ब्राउज़र पे, मैं पहले एक स्टेट बनाना है डेटा और ये जो स्टेट है ये नल कर लेते हैं, फिलहाल ये नल होगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो है ना फॉर्म डेटा है इसमें हम बनाते कॉम डेटा नेम ईमेल पासवर्ड ये यहाँ पास कर लेते हैं। और ये जो हमने वेरिएबल बनाया ना डेटा, इसमें ये जो डेटा ये पास कर लिया। अभी हमें ये डेटा यहाँ शो करना है। सेव के बाद डेटा डेटा सबमिट पे लॉजिक लगाते हैं का मैं क्या करना शो करना क्या नेम सबमिटेड डेटा डॉट नेम ये कॉपी कर लेते हैं। जब भी हमें मल्टीपल कंपोनेंट चीज़ें रेंडर करना होता है तो हमें वो वीडियो में देखते हैं। इसके अंदर रेंडर कर देते हैं।
अभी 3 टाइम कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ये हो गया, ये सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे, लेते हैं ईमेल पासवर्ड हम सबमिट पे क्लिक कर लेते हैं। एरर है, चलते हैं क्या एरर है, यहाँ पे एरर है, सबमिट के लिए कर लिया, सेव करके ऑप्शन पे ब्राउजर की ये हमारे पास ये फिल है, जस्ट सबमिट कर लेते हैं। तो नेम हमारे पास सारी चीज़ें शो हो रही, नेम, ईमेल, ये एक कर लेते हैं वापस सीधे ब्राउज़र। हमारे पास अभी सीक्वेंस में शो है, नेम, ईमेल, ये चीज़ हमें यहाँ शो हो रहा है। तो ये हमारा React.js का काम होता है। आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।